जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए। पहले तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है दैट इन Srinagar district alone, KPDCL has successfully installed around 90,000 smart meters, and this has been going on for the last many months now. And सबसे अहम बात इसमें ये है कि we had promised consumers that wherever areas will get smart meters, they'll get almost 24 hours supply during winters without curtailment, and that is a promise that we have managed to achieve. In within Srinagar, major areas have been covered, and particularly downtown की अगर बात करें शहर खास में, we have roughly done around 1,000 consumers, including all areas such as Hawal, KK Mohalla, or Rainawari, Khanyar as well. And yes, we have faced certain opposition to the same. आप सबने देखा भी काफी जगह. How we are able to break through the people's resistance by somehow consulting them, taking them on board. हम एक्टिवली उन्हें ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स के बाकायदा बेनिफिट्स हैं, और ये नॉट जस्ट की 24 आवर सप्लाई आपको मिलेगी, बट योर मीटर रीडिंग विच इज फर्दर बिल्ड इनटू योर मंथली billing is verified. It's not tenable for any fudging because of human discretion कि किसी मीटर रीडर ने आपका बिल अगर गलत लगा दिया या something like that. So that possibility is completely erased, and furthermore, efficiency in terms of ensuring that we are giving good wattage of power, that is also maintained through a smart meter, particularly in areas which are located at the far end of a DT or a receiving station. सर अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मीटर्स नहीं लगाए गए, लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं, क्या कुछ एडवांटेजेस है जिस तरह से हमें अलाउ में देखा कि पावर भी हासिल नहीं है, क्या कुछ? जी देखिए, पहले मैं एक बता दूं, एक बहुत बुरी खदशात थे लोगों के जहन में कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल ज्यादा आ रहा है. ये हमने बहुत इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं उनके बिल में किसी भी तरीके का इजाफा नहीं हुआ है. इनफैक्ट एक हमने ट्रेंड नोट किया कि जिनके स्मार्ट मीटर लगा था उन्हें, बिकॉज स्मार्ट बीएस ऐप के जरिए आप अपना डेली वॉटेज देख सक रहे थे, तो उन्होंने अपना बिल कंजम्पशन, उनकी खपत कंट्रोल की, सेल्फ कंट्रोल की. तो दैट सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट इट मेड, एंड पीपल एवरीवेयर आर मेजरली using the smart BS app and checking and monitoring their consumption on a instant basis at any time of the day. In fact, मैं आपको ये भी बताऊं कि स्मार्ट BS app के जरिए सार्फिन को अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस भी आते हैं कि आपके आज की खपत इतने यूनिट्स हो चुकी है और इतनी रकम आपकी बन चुकी है. इस यही तरीका है कि हम एक सस्टेनेबल और फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी सिनेरियो मेंटेन कर पाएंगे. सर एक सवाल पूछना चाहिए, क्या इसमें कुछ ला है अगर कोई स्मार्ट मीटर का छेड़छाड़ या चोरी? जी बिल्कुल. अंडर द सप्लाई कोड एज वेल एज द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, देयर आर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस विद एनी कंज्यूमर or member of the public who is tampering with any sort of meter, including a smart meter. And जो हाल ही में जिस जगह हमें कुछ किसी तरीके की मुखाफलत हुई और बातचीत के बावजूद भी अगर किसी ने मारामारी अपनाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई भी है. Arrests have also taken place and people have been fined also. So in some way or the other, we are able to convince people to put up with this because it's ultimately for their own benefit. सर रमजान आने वाला, लोगों की खदशात रहते हैं इफ्तार और सहरी के वक्त में, बताइए कि नॉन मीटर एरिया और मीटर एरिया में क्या कुछ पावर के साथ? जी पहले ये बता दूं कि हमारा जो पीक लोड डिमांड पीक विंटर्स में था, which was roughly 2900 megawatt, it has fallen down to solid 2000 megawatt at this time. Thanks to the weather also improving over the last few weeks. और हमारा अभी अवेलेबिलिटी के लिहाज से 1700 मेंटेन्ड है. So whatever curtailment that we're facing in minor areas, that is happening, reducing day by day, and by the beginning of Ramzan, we'll be able to ensure a much better scenario. In any case, the Sehri and Iftar hours will not be affected in any manner, and furthermore, any specific arrangements that will be required. क्योंकि अगर तरावी के लिए कुछ मस्जिद एरियाज में प्रॉपर इल्यूमिनेशन या किसी तरीके की वॉटेज इशू है, सो दोज आर आल्सो बीइंग एड्रेस्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर, इन अ टाइम बाउंड मैनर. एलटीएबी केबलिंग के बारे में जी सी एलटीएबी मायने लो टेंशन एरियल पंच केबल, और इसका सिंपल मायने कि ये इंसुलेटेड केबल होता है और एयर कंडक्टर पे क्योंकि हुकिंग बहुत पॉसिबल होती है, सो लॉस रिडक्शन मेजर्स में हम अपार्ट फ्रॉम मीटरिंग एलटीएबी भी इंस्टॉल करने जा रहे हैं. हमने पिछले कुछ स्कीम्स जैसे आईपीडीएस या पीएमडीपी में भी केबलिंग की है. फिलहाल मेजर चंक जो कवर होगा वो
RDSS में होगा, रिवाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि KPDCL is the first discom in the country which has successfully done work allotments for the RDSS works, either directly or through EIAs, जो हमारी central PSUs है like PGCIL and NTPC, उनके through. In fact, we are ahead of many other leading discoms undertaking this process, and within a couple of months we'll see massive LTAB coverage work also happening in all divisions of Kashmir Valley.